Hi guys, how are you? Hope you are all feeling well. Well, this is the time of morning and this is fresh and energetic morning. So let us enjoy by studying. So I have again come in your service with some words that are frequently used in newspaper in the word of crimes. यानी क्राइम की दुनिया में जो है कुछ वर्ड्स जो डेली पेपर में आते हैं उन्हीं को मैं लेकर के आया हूँ और हम साथ साथ पढ़ेंगे. So the very first word goes abduct. Like you can see here, abduct. Abduct means kidnap. To carry off a person, अपहरण कर लेना, अगवा कर लेना. Okay. Now I have used an example. The cabinet minister was abducted because he was without his security guard. यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर था उसको जो है अपहरण कर लिया गया उसका क्योंकि ही वॉज विदाउट सिक्योरिटी विदाउट हिज बॉडी गार्ड. ओके, so like this we can use the word abduct. You can use that she was abducted, he was abducted. तो abduct means kidnap करना, अगवा कर लेना. Kidnap is very familiar word and you know this word, but abduct is little bit new, that is frequently used in newspaper. Okay, now see abduction or kidnapping. This will be noun according to part of speech, that means अपहरण. एबडक्टर किडनैपर इज़ द पर्सन हु एबडक्ट्स. जो किडनैप करता है उसको हम क्या कहते हैं? एबडक्ट कहते हैं. किडनैपर कहते हैं अपहरण करता. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, एब्सकॉन्ड. दिस इज आल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन न्यूज़पेपर. एब्सकॉन्ड, टू फ्ली, टू स्केप. फरार हो जाना, भाग जाना. आफ्टर कमिटिंग क्राइम, अपराध करके फरार हो जाना. ओके, द मिसक्रिएंट. मिसक्रिएंट मीन्स रोग और यू कैन से वैग्रेंट, बदमाश या लुटेरा. इसको हम क्या कहते हैं? मिसक्रिएंट कहते हैं. लूटेड द विमेन एंड एब्सकॉन्डेड. उन्होंने जो है वो अपराधी ने जो है औरत को लूटा और वो फरार हो गया. एब्सकॉन्डर, वन हु एब्सकॉन्ड्स, फरारी, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव कहते हैं, भगौड़ा. लाइक यू कैन से विजय माल्या, ललित मोदी, एंड देर आर सो मेनी. नीरव मोदी. दीज आर businessmen who looted banks in our country and fled from this country to another country. तो fugitive means भगौड़ा होता है, absconder. Okay, like if anyone commits crime and after committing crime he or she leaves the country or the state or the area, she or he will be fugitive. तो उसको हम क्या कहेंगे? भगौड़ा. तो hope you have understood this as well. See the next, ambush. Ambush, concealment of troops. आउटफिट टू अटैक, घात लगा करके जो है वार करना. यानी टू बी हिडन ऑलरेडी विद द पर्पस ऑफ अटैकिंग समवन, किलिंग समवन, जिसको हम कहते हैं घात लगा करके बैठे रहना या फिर वार करना. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू अटैक समवन, यू विल ट्राई टू लोकेट हिज एरिया, हिज कमिंग एंड गोइंग, एंड देन you will be hidden there, and this is how you will attack. Means pre-planning of attacking someone, that too in a secret way. तो that is what we call ambush. घात लगा करके बैठे रहना. okay, घात लगा करके वार करना. Like I have used an example, the criminals were lying in ambush and attacked a bus to loot the people on board. यानी क्रिमिनल लोग जो थे वो पहले से ही घात लगा कर बैठे थे. उन्होंने एक बस को जो जा रही थी उसके ऊपर अटैक कर दिया और जो सवार लोग थे उस पर, यात्री, ट्रैवलर्स, पैसेंजर्स, उनको जो है लूट लिया. तो प्री प्लानिंग, दैट टू इन ए सीक्रेट मैनर, इज़ नोन एज एम्बुश. होप यू हैव गॉट दिस वर्ड. एम्बुश इज़ आल्सो वर्ब. यू कैन यूज इन वर्ब लाइक दिस. द अटैक वॉज एम्बुश्ड, यानी इट वॉज प्री प्लान्ड. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, रॉबरी. What does it mean, robbery? Loot, plundering. Okay, robbery. Robbery in the city traders house. Okay, so robbery often takes place in our state, in our area, because the robbers have increased, and because of lockdown and because of COVID-19, as you know, the inflation has gone up and people are running from pillar to post to get money. So because of that, because of extreme poverty, because of lack of money, people change their lifestyle into robbery, into looters. So robbery will continue and it has not decreased. So robbery means loot, mar, cart, loot. Okay, robber will be the person who robs.
जो रॉबरी कमिट करता है उसको हम रॉबर कहते हैं, प्लंडर, लूटर. होप यू हैव गॉट दिस वर्ड. Now see the next word, pirate. Pirate is also a robbery, but it is different a little bit. It is done only on voyage. Voyage means a sea journey. When you are journeying through ship or through any kind of thing like boat, sailing boat, and there are some robbers. They come to your ship and attack and loots you. Whatever you have, it is looted. So this kind of एक्ट विल बी कॉल्ड पायरेसी. पायरेसी लूट हो जाएगी. और पायरेट मीन्स समुद्री लुटेरा, ए सी रॉबर. ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पायरेट. पायरेसी वाइल वोवेज ऑफन टेक्स प्लेस. यानी पायरेसी जो है कब घटित होती है, जब समुद्री यात्रा कोई कर रहा होता है, उसका जो है माल और जो भी चीज़ वो लिए रहता है उसको लूट लिया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड पायरेट पायरेसी, एंड द पर्सन हु डज दिस विल बी नोन एज पायरेट. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now see the next word, extortion money. Extortion money, before this I have used ransom money. So ransom money and extortion money is a little bit similar. There is a little bit different, but somewhat it is similar. I have used ransom money in previous video, you can watch. Okay, so here extortion money means money obtained by violence. Gunda gardi karke, tax, gunda tax, that we call gunda tax. Like if you want to collect extortion money, so what will you do? You have some gangs, you have some team, and you will go to the shopkeepers, wherever you see that the shop is running well, so you will just dominate yourself, and you will point a gun at the shopkeepers, and this is how you will loot that person. So this type of act, this type of a bad act is known as extortion money. Okay, extortion money means मनी obtained by violence, गुंडा टैक्स, जबरन छीना हुआ पैसा. एक्सटॉर्शनिस्ट विल बी द पर्सन हु डज दिस, यानी लुटेरा या गुंडागर्दी करने वाला. वेयर अरेस्टेड अलॉन्ग विद एक्सटॉर्शन मनी, यानी एक एक्सटॉर्शनिस्ट थे, यानी एक्सटॉर्शनिस्ट लोग जो है गिरफ्तार किए गए किसके साथ? पैसे के साथ, जिन्होंने लूटे थे ऑलरेडी लोग. ओके, सी द नेक्स्ट वर्ड, ब्रॉड डे लाइट. ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में, या we often say in our language दिन दहाड़े. He was murdered in broad daylight. Okay, if someone is being murdered, that too when there is midday, and the running of vehicles is just going on, still someone is killed like that. So this is what we call broad daylight. He was murdered in broad daylight, यानी दिन के उजाले में, या दिन दहाड़े जो है किसी का मर्डर होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रॉड डेलाइट. ओके, now see the next, indiscriminate firing. Indiscriminate firing, अंधाधुन firing, यानी without stoppage, just continue. Many people were killed in indiscriminate firing by criminals in a hotel. यानी एक होटल में जो है अंधाधुन फायरिंग हुई और बहुत से लोग मारे गए. तो दिस इज हाउ वी यूज दिस वर्ड, indiscriminate firing. Okay, and this is quite often used in newspaper. Now see the next, spray bullets. Okay, spray means to sprinkle something, like we use spray in summer season, also in non summer season, so that our body may not smell. Okay, so spray means to sprinkle something, कोई चीज़ छिड़कना. It could be something, any medicine or any scent or perfume. But here see, spray में bullets means गोलियाँ होती है, as you know, तो गोलियों की बौछार कर देना. ओके, ही वॉज स्प्रेड विद बुलेट्स, यानी उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई. ओके, ओके, तो यू कैन यूज़ लाइक दिस. ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, स्निफर डॉग. खोजी कुत्ता, फौजी कुत्ता. स्निफर, स्निफ मीन्स होता है टू स्मेल थ्रू नोज. एज यू नो दैट द स्मेलिंग पावर ऑफ डॉग्स इज मच, एंड दे आर एक्सेल्ड इन दिस art or in this quality gifted by God. Okay, so they have very good smell power. So this is why dogs are used in army, in the field of criminal, so that they can help the cops and the policemen and the army men or the CBI branch to reach the culprit very easily. So they have the power of smell, and by smelling they just reach the spot, and this is how criminal cases are exposed. इसी तरीके से जो है क्रिमिनल केसेस एक्सपोज होते हैं, तो उनका सहारा लिया जाता है. तो सच डॉग्स आर कॉल्ड खोजी कुत्ते, और इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं. इसको कहते हैं स्निफर डॉग्स. ओके, लाइक यू हैव सीन
in lots of movies and in real life that when any crime takes place, let's say there is any explosion, bomb explosion, so now sniffer dogs are used, and by smelling the spot with the help of their nose, they just reach the spot where the incident took place or the accident took place, and this is how CBI or the cops start investigation, and the crime is reached, and the criminal is reached. So this is how we can use the word sniffer dog. Okay, hope you've got this. Like I have used an example, you can see sniffer dogs help reach the crime spot, यानी जो है ये कुत्ते क्या करते हैं, हमको पहुंचाते हैं क्राइम स्पॉट पे जहाँ पे ये चीज़ होती है, क्रिमिनल केसेस होते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट, पेल्ट ए स्टोन. दिस इज़ वेरी कॉमन. पेल्ट मीन्स टू हर्ल, टू थ्रो एट, यानी फेंकना कोई चीज़, और स्टोन में पत्थर, पथराव करना. ब्रिक बैटिंग. ब्रिक मीन्स द ब्रिक दैट वी यूज़ to construct walls and house. A batting, you know already, familiar, bat like 6s and 4 in cricket. So brick batting means batting of bricks. So often this takes place, as you know, when there is any demonstration or any dharna, you can say, so there are lots of pelting of stones from the mobs on the police, and the people become angry, and this is how they start throwing pelting stones on cops because of anger. So this is what we call brick batting, pathrav karna. Like I have used an example, irate mob. Irate means angry. Mob means collection of people. Ugra bheed, pelted stones when a bus crushed a 9-year-old boy. यानी कोई 9 साल का बच्चा था, उसको जो है किसी बस वाले ने दबा दिया या फिर कुचल दिया. ओके, तो उसके प्रोटेस्ट में पीपल स्टार्टेड pelting stones. Okay, so hope you have got this. So this is quite often used in newspaper, because as you know, lots of crimes and such incident took place. So this is why you will often see this word, pelt stone. Okay, like you can use in your own language, do not pelt stone at those people who are living in glass wares or glass houses, because they can throw back at your houses as well. Now see the word culprit. Culprit means guilty, doshi. Okay, those culprits will be hanged to death. यानी वो जो दोषी हैं, जो मुजरिम हैं, या कह सकते हो कि जो जिन्होंने जुर्म किया है, उनको फांसी दे दी जाएगी, मौत की सज़ा. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, एक्सट्रीमिस्ट, मिसक्रियन, एक्टिविस्ट, उग्रवादी, उपद्रवी. ओके, एक्सट्रीमिस्ट, मिसक्रियंट, एक्टिविस्ट, उग्रवादी. सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेड द एक्सट्रीमिस्ट विल नॉट बी स्पेयर्ड. यानी जो एसपी थे, उन्होंने कहा कि जो उग्रवादी लोग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. तो एक्सट्रीमिस्ट मीन, दिस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड एक्सट्रीम, माने कोई चीज़ छोर पे पहुंच जाए, यानी द पर्सन हु इज़ रियली ऑर्थोडॉक्स इज नोन एज एक्सट्रीमिस्ट. ओके, तो नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेड द एक्सट्रीमिस्ट विल नॉट बी स्पेयर्ड. यानी दोज पीपल हु इंडल्ज इन दिस एक्टिविटी and in extremism will not be tolerated, will not be spared. Hope you have got this. Now see the next word, detainee. Detainee, who are detained, arrested, हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार. So it is coming from detain. Detain means to stop. तो detainee माने जिनको रोका गया हो, हिरासत में लिया गया हो because of suspicion or because of doubt. Maybe they are not criminal, but on the basis of doubt they are arrested, and later after investigation they are released. So those who are under arrest is known as detainee. Those innocent detainees must be released as soon as possible, said the CM. CM ने कहा जो detainees हैं, जो innocent हैं, निर्दोषी हैं, उनको जितनी से जल्दी रिहा कर दिया, यानी जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए. Now see the detention is coming from the same root. Detention is noun of detain. Okay, so detention means verb will be detain. डिटेंशन, कन्फाइनमेंट, कीप इन कस्टडी, हिरासत में रखना, किसी का सीमित कर देना, या जेल भी कह सकते हो. ए डिटेंशन कैंप हैज़ बीन रेज्ड. एक डिटेंशन कैंप रेज्ड यानी बनाया गया है टू लॉक अप दोज मिसक्रिएंट्स, यानी जो है वो जो उपद्रवी हैं उनको उसमें डालने का, उसमें बंद करने के लिए एक डिटेंशन कैंप बनाया गया. लाइक यू नो, बिफोर दिस व्हेन COVID-19 was prevalent, तो because of lack of medical infrastructure, there were being made
detention camp to keep the COVID positive, okay, so that they may not spread COVID virus anymore. So lots of such improvised detention camp were made, okay. तो दिस इज वर्ड विल कॉल डिटेंशन, ओके, यानी कन्फाइनमेंट, यानी हद जिसको कहते हैं कन्फाइनमेंट. नाउ होप यू हैव गॉट दिस वर्ड. सी द नेक्स्ट वर्ड, इवेडिंग अरेस्ट. इवेड मीन्स होता है टू स्केप, बच जाना. अरेस्ट मीन्स यू नो ऑलरेडी, गिरफ्तारी से बचते रहना, ओके. द कल्प्रिट हैज़ बीन इवेडिंग अरेस्ट सिंस ही कमिटेड क्राइम, यानी जब से उस क्रिमिनल ने कमिट किया है क्राइम, तब से वो जो है फरार है, यानी बच रहा है. पुलिस हैज़ नॉट arrested him yet, okay. Now see the next word, nab. Nab is often used in newspaper. What does it mean? To hold by collar, yani like when we fight, of course we just hold collar and this is how we start fighting. So nab means hota hai दबोचना, गिरफ्तार करना. Like I have used an example, the rapist was trying to abscond but the police nabbed him and jailed him. यानी जो है कोई रैपिस्ट था, वो जो है भाग रहा था, एब्सकॉन्ड कर रहा था, फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस ने इसको दबोचा और फिर जेल में डाल दिया, ओके. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द वर्ड नैब, ओके. लाइक यू कैन से दैट माई फ्रेंड हु वाज इन स्कूल, ही वाज जस्ट escaping the class, but the principal nabbed him by collar and thrashed him and beaten him. So this is how you can use the word nab, okay. Now see the next word, carry rewards on head. Carry rewards on head, इनामी, किसी के सर इनाम होना. लाइक यू नो it happens that any criminal is very dominant and he is not being arrested because he has power and he has guts, so police is unable to arrest that particular person, okay. So now the police department announces that if anyone catches or holds or arrests that particular criminal will be rewarded. So this is how reward is put on that person so that people may arrest him, okay. तो ऐसा होता है कि कभी जो कोई इनाम बदमाश ऐसा होता है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, या फिर कह सकते हो कि ही इज़ वेरी डोमिनेंट, तो फिर उसके ऊपर कुछ रिवार्ड्स रख दिया जाता है कि इफ़ एनीवन होल्ड्स हिम, अरेस्ट हिम, तो ही विल बी रिवार्डेड. तो उसकी लालच में जो है लोग और एक्टिव होकर उसको पकड़ने की या उसके जो है बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कैरी रिवॉर्ड्स ऑन हेड, के सर पे इनाम होना. लाइक आई हैव यूज्ड एन एग्जांपल, द क्रिमिनल कैरीज ए बाउंटी ऑफ 50,000 ऑन हिज हेड, यानी उसके सर जो है 50,000, यानी एनी वन इफ़ अरेस्ट दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल तो विल बी गिवन हाउ मच मनी, 50,000 मनी, ओके. तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द वर्ड कैरी रिवॉर्ड्स ऑन हेड, ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, हैच द कॉन्स्पिरेसी. हैच द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, चाल चलना, ओके. प्लाट, मर्डरिंग, प्लाट समथिंग अनफेयर, कोई चीज़ रचना, कोई चीज़ प्री प्लानिंग करना जो अनफेयर हो. लाइक आई हैव यूज्ड इन एग्जांपल, द एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, हैच्ड द कॉन्स्पिरेसी एंड लूटेड हिज बॉस एंड मर्डर्ड हिम, यानी कर्मचारी कोई था, उसने खुद ही जो ये प्लान किया और अपने ही बॉस को लूट करके उसका मर्डर कर दिया, ओके. तो दिस इज़ हाउ वी कैन से कॉन्स्पिरेसी, ओके. Now see the next word, encroach. Encroach, which is verb according to part of the speech. To intrude, trespass, अतिक्रमण करना, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना. Like today you will see that across the state in UP and other parts of the country, the police are active and removing the illegal encroachments. So with the help of bulldozer, those illegal acquisition of lands and other spot are being removed. So that is a good act because that was becoming the reason of jam and traffic problem, okay. So you may see that this activity of removing of those illegal acquisition or encroachment is being done by the government and it is continuing. जो चल रहा है अतिक्रमण, जो जितने भी लोग किए हुए हैं सबका तोड़फोड़ हो रहा है बुलडोज़र से. ये हमारे स्टेट में भी हो रहा है और अदर स्टेट्स में भी हो रहा है. तो ये एक अच्छा पहल भी है, लेकिन सबके साथ इक्वालिटी के साथ ही हो तो ठीक है. देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी, और लोगों को परेशान करके नहीं. जो है इलीगल दैट शुड बी रिमूव्ड. सो इट मे हेल्प वाइडन द एरिया एंड दिस इज़ हाउ देयर विल नॉट बी एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम. सो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बट देयर शुड नॉट बी पार्शियलिटी. अगर तोड़ा जाए तो सबका तोड़ा जाए, उसमें किसी का भेदभाव ना हो, तो दैट विल बी गुड.
So this is what we call encroachment. Okay, like I have used an example, illegal acquisition of land. Acquisition means ग्रहण कर लेना कोई चीज़, चाहे लैंड ज़मीन हो गई या कोई और जगह गलत तरीके से. विल नॉट बी टॉलरेटेड, सेड द सीएम ने कहा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यानी दोज हु हैव accused or you can say encroached such kind of area places will be punished severely. Okay, तो encroachment will be noun अतिक्रमण, illegal accusation. Now see the next and the final word, point blank range, close range, यानी to shoot someone very closely. ओके काफ़ी करीब से, नज़दीक से, सटा करके जिसको कहते हैं गोली मारना. लाइक इफ़ यू वांट टू शूट समवन यू कैन शूट दैट पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस एज वेल. But if you shoot him just being standing by him and you are pointing your gun at his temple, temple means kanpatti you can say, and this is how you shoot that particular person. So this type of shooting will be called point blank range shooting. Okay, यानी एकदम करीब से, नज़दीक से सटा करके गोली मारना. Like I have used an example, criminals riddled 2 bullets, okay, in his chest एट ए क्लोज रेंज. यानी क्रिमिनल ने जो है उसके चेस्ट पे, उसके सीने पे 2 गोलियां दागी और इस तरीके से उसको मार डाला बहुत ही करीब से, यानी एकदम जो है सटा करके. तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस वर्ड. सो गाइज होप यू हैव enjoyed this video, and all these words that I have mentioned before you are very lucrative, and these are the part of newspaper, and this will help you to enrich your language. And these words that I have used are also the part of competitive exam. So do not take them lightly, take them seriously, note down anywhere if you have notes, and also try to frame your sentences. This will help you a lot. So thank you for watching. So if you have any question and query, you can comment, and please do not forget to subscribe and also give your feedback. That matters a lot. So thank you. Keep enjoying, keep loving literature and words as well. Thank you.